Hello and welcome to the special sessions around looking for breakouts and great fundamentally strong results that we have got through the last week in a quick review over here on the YouTube. So पहले वाले वीडियो में मैंने पहले ही शेयर कर दिया है कि ओवरऑल हमारा मार्केट के बारे में क्या आउटलुक रहेगा, किस लेवल्स के ऊपर जाते हुए निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाई देगी। इस वीडियो में अब हम देखेंगे वो 5 स्टॉक्स जिनके ब्रेकआउट सेटअप्स काफी अच्छे हैं, एज वेल एज वो 5 स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। तो दोनों को मिला करके कहीं पे भी अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में खुद के लिए प्रॉफिट करने के लिए तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी आइडियाज ही आपकी तरफ लेके आऊं। काफी फिल्टरिंग करता हूं अलग अलग स्कैनर्स, अलग अलग स्ट्रेटजीज के थ्रू, तब जाकर के ये लिस्ट तैयार होती है फॉर योर स्टडीज ऑलवेज। क्योंकि मैं सेबी लिस्टेड नहीं हूँ, डू नॉट रियली जस्ट गो एंड ट्राई टू वर्क बेस्ड ऑन माय इनपुट्स। ओके, डेफिनेटली दीज आर आइडियाज, आपको खुद स्टडी करना है, खुद मार्केट में डिसीजन लेना है। जब भी आप सीखना चाहें, फील ओपन टू कनेक्ट विथ मी, राइट। तो चलिए देखते हैं बेस्ट ब्रेकआउट्स दैट आई एम ऑब्जर्विंग करेंटली ऑन द चार्ट्स, राइट। तो शुरुआत में एक फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है जो कि टेक्नो फंडा है। Now this stock is fundamentally also has delivered a great results and technically also इसका जो ब्रेकआउट सेटअप अभी हमको दिख रहा है वो बहुत ही अच्छे पॉइंट पे है। तो इसलिए द बेस्ट टेक्नो फंडा केस दैट आई हैव टुडे इज आनंद राठी। तो आनंद राठी का यह सेटअप आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मेजर जो मुझे सेफ्टी नजर आ रही है वो ये है कि आप की जो एंट्री होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी नियर द लॉन्ग टर्म एवरेज। ये जो नियर टर्म लॉन्ग टर्म एवरेज है 200 MA। नाउ दिस इज अ ग्रेट स्पॉट्स टू गेट स्टॉक्स वेयर इफ दे गिव अ ब्रेकआउट हाई पोटेंशियल लॉन्गर रैली पॉसिबिलिटीज आर देयर, क्योंकि प्राइसेस अभी भी उस स्टॉक्स के स्ट्रेच नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम भी आया है फ्राइडे के दिन, एज वेल एज आपको दिख रहा है कि एक पैटर्न जो है वो क्लियरली यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके सेटल हो गया है। तो एक्चुअल ब्रेकआउट जो आया है वो यहाँ पे आया हुआ है ऑन अ कप एंड चीट फॉर्मेट। ओके, कप एंड चीट फॉर्मेट में से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन जैसी कि मार्केट की कंडीशंस है आपको फ्री फ्लोइंग मोमेंटम रेयरली मिलने वाला है। और वैसा ही स्टॉक के हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करता रहा फॉर अबाउट अ वीक, और फिर इस रीटेस्ट लेवल से भी इसने आगे की मूव दे दी है। तो ध्यान रखिएगा आनंद राठी के ऊपर। फंडामेंटली अगर स्टॉक की बात करता हूं तो रिजल्ट आ चुका है, अगर आप जाएंगे क्वार्टर्स में यू कैन ऑब्जर्व सितंबर रिजल्ट इज आउट एंड easiest वे द वे आई लुक एट द स्टॉक्स इज द मैक्स एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, द मैक्स एवर EBIT for the quarter, and then you can observe best ever अर्निंग पर शेयर ऑन द क्वार्टरली बेसिस। सो ये सब हुआ है स्टॉक में, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, ये सब करते हुए भी स्टॉक ने कुछ बड़ा रनअप अब तक नहीं लिया है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, इस स्टॉक के ऊपर आपको ब्रेकआउट डेफिनेटली आप सेफली प्ले कर सकते हैं। दूसरा है बॉम्बे डाइंग। तो ये पैटर्न यहाँ पे है आपके सामने। अब इस पैटर्न को हम टिपिकली मार्केट में क्या कहते हैं, यू हैव टू राइट डाउन इन द YouTube comments. So this is the pattern that we are getting on the Bombay dyeing, and this is a good base to work upon. Again, 200 MA के नजदीक है, चांसेस हैं कि और रैली यहाँ से लंबी जा सकती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जब मार्केट गिर रहा था ये स्टॉक ने अपनी पॉजिटिविटी बना के रखी हुई है, वॉल्यूम एडिशंस भी हुए हैं, गुड चांसेस कि हम बॉम्बे डाइंग में ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं यहाँ से। फिर तीसरा ब्रेकआउट जो आप जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है दैट इज HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ में अगेन you can observe over here what is the move coming. So you can see this is a clear cut breakout, and the pattern that you can see over here is, yes, you can tell me what is the pattern which is there in HDFC life, right? So you will have to tell me what is the pattern that we are looking over here
in Anand Rathi, what is the pattern that we are able to see in SDFC Life. So good setup, high chances that the earlier momentum which has got absorbed now, a fresh leg is coming, volume additions happening. HDFC Life is the third stock to look for through this week. अगला स्टॉक है जो काफी स्ट्रांगली रन अप जिसने पूरे साल भर दिया। अगर आप देखेंगे माजगांव डॉक को जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत ही सॉलिड रन अप इसने दिया और उसके बाद प्राइसेस जो है वो आपकी करेक्ट हो गई थी। और उस करेक्शन का जो चैनल है उसमें से अभी ये रिवर्सल मूव देकर के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है फॉर अ नाइस रिकवरी ट्रेड। अगर आप ठीक से देखेंगे बाय पुटिंग द फिबोनाचीज ऑल्सो ओवर हियर, यू कैन ऑब्जर्व हाउ द थिंग्स हैव गॉन right from here. So this is where you can observe how the trend went, and from that trend, how far is the correction that it has gone through. तो ओवरऑल ये जो ट्रेंडिंग मूव आई थी, सो उसके अराउंड 50% हमको रिवर्सल मिल गया है, सो विच इज रीजनेबल इनफ अ नंबर टू वॉच फॉर अ फर्दर रैली। और बेस्ट पार्ट क्या है, इफ यू गो, इट इज क्लियरली शोइंग देयर इज अ सेलर, there is a seller who is existing at this point, I think around 4600। तो 4600 क्रॉस होने के बाद, 4800 क्रॉस होने के बाद एक अच्छा रिकवरी मोड मैजगॉडॉक में आ सकता है। डेफिनेटली पुट इट ऑन एन अलर्ट। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग केस है, डिफेंस इज अ थीम दैट इज going to remain active because of the geopolitical situations, right? Next is NetWeb Technologies. Now, in the NetWeb, you can observe a good pricing pattern that has formed. Breakout आना है. So this is a bit of a alert, advance alert to you guys. And this is something which I have got today from the बुल स्ट्रेटेजी डैशबोर्ड। तो बुल स्ट्रेटेजी डैशबोर्ड जो हमने बनाया था 3 हफ्ते पहले, जिसको मैंने आपको दिखाया था चार्ट यहाँ पे यूट्यूब पे, उसका यूज करके स्टॉक मिला है एंड लुकिंग गुड। नेटवेब इज लुकिंग गुड एंड इट इज बिलोंगिंग टू द IT arena, so you can observe NetWeb also for good moves from here. Fundamentals are good. You can observe it is a high margin business with good growth also in place. Risk is P by E, but that is how you can play momentum. Otherwise, आप momentum play नहीं कर पाएंगे। तो NetWeb is into the higher end computing solutions, the AIs as well as the supercomputer solutions. So, lot of things happening in this sector. So, going with the sector, going with the theme as well as very solid fundamentals, you should definitely be watching the play around the NetWeb। इस क्वार्टर का रिजल्ट भी आ गया है और रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के आगे है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ओवरऑल बेस्ट एवर रेवेन्यू एंड द सेकंड बेस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। So the challenge that we are seeing over here is in terms of the margin. Revenue also is not really that great. It is not the best so far. But overall, you can observe quarter to quarter, YOY, it is showing a great, good growth in terms of its earnings, as well as annual growths are also pretty stable. So NetWeb is something that you should keep a watch on. Okay. So this is also Technofunda. Anand Rathi is Technofunda. NetWeb is Technofunda, right? एंड वेन एवर अ प्राइवेट बैंकिंग मूव्स कम्स, तो जो मैंने आपको दिखाया था हमारे वीकली रिव्यू में, इस हफ्ते जो बहुत बूम बूम सेक्टर चला है दैट इज द निफ्टी प्राइवेट बैंक। और जब भी कभी प्राइवेट बैंक की बात होती है तो मेरा तो फेवरेट है करूर व्यास्य। और एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स फंडामेंटल्स ऑल्सो दिस स्टॉक इज वेरी प्रॉम्प्ट टू बाउंस। अगर मैं आपको दिखाऊं 200 MA के ऊपर की इसकी जर्नी, you can observe how much money it has given through the last 2 years. Very strong journey from 200 MA, यानी 200 MA इसने क्रॉस किया था लास्ट टाइम, दैट वाज एट 50 रुपीज। 50 रुपए से निकलते निकलते ये 230 तक चला गया था, तो अराउंड 4x हो गया था। वहां से करेक्शन आया है एंड अगेन इट हैज क्रॉस्ड, इट हैज बाउंस फ्रॉम 200 MA। यू कैन ऑब्जर्व
इट इज अ क्लियर बाउंस, नीचे नहीं गया, क्लियर बाउंस हुआ है, वॉल्यूम एडिशंस हुआ है. सो Karur Vyasa is the bank that you should be looking at. Let me show you some of its fundamentals. Just a quick one. So, if we look at quarters, yes, September results are out, and the fundamentals, to me at least, from here looks like healthy. You are having best of the revenue, and there's a dip in the margin, and that is where you can observe this has not really led to a best of its EBITDA. So overall, quarter to quarter sequentially, EBITDA is dropped, as well as YOY, there is a drop over here. So this is something that will be uh, a point to observe while you trail this stock. But on yearly basis, this is a stock which is growing very, very strongly. So you can observe, apart from COVID period, it is always sequentially growing. So this growth is something that reflects on the chart's price also. So the fifth stock to watch in terms of breakouts happening will be Karur Vyasya. So Anand Rathi, Bombay Dyeing, HDFC Life, Masdok, NetWeb, the five names, and then the sixth one is the Karur Vyasya that you should be watching. Okay, so that was all about technical setups जो अभी अच्छे लग रहे हैं. फिर जब हम जाते हैं कि फंडामेंटली एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें से पांच बेस्ट रिजल्ट्स मैं आपके लिए चूज करके लाया हूँ. मेनली कमिंग फ्रॉम द आईटी सेक्टर, कमिंग फ्रॉम द financial services, but more towards the brokerages kind of a business. So the first one is Mastech. So Mastech has delivered very strong growth. You can observe over here. Overall, for the year, it is 35% up in growth. This quarter has been its best quarter. Operating margins are remaining steady. Debt is under control. And while all this thing is happening, valuations are very comfortable. So in the IT, if you can observe, as far as the valuations goes, you can see it is at a very comfortable level. So Mastech, with the result that it has delivered, the highest ever earnings, the highest ever EBIT, highest ever sales revenue. So Mastech from the IT sector is one great fundamental result. Second good fundamental result, again coming from an IT sector company, that is a Newgen. You can observe over here the growth trajectory is maintained, operating margin is healthy, profit growth annual basis is also healthy, and P by E is definitely not that comfortable, but low public holding on a mid cap stock sounds good, right? So definitely track Newgen software also for your entries based on fundamentals. फिर अगला स्टॉक है जिसको अभी हमने टेक्निकली एनालाइज किया था, अभी फंडामेंटली भी आप देख लीजिए. दिस इज द स्टॉक, दी आनंद राठी वेल्थ. तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है आपके पास, हाई रिटर्न रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ROI, profit growth is good, the trend of quarterly growth is also good in terms of the EPS. So overall, a good business to track. Again, a mid cap. Anand Rathi is something that you should be watching in the coming days. High chances that this will also give you a good move, mainly because अब तक इसमें कुछ रन अप हुआ ही नहीं है. 200 MA के पास में प्राइस खड़ा है, तो काफी हद तक ऊपर रैली करने के इसमें चांसेस हैं. तो ये तीसरा रिजल्ट था स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स की श्रृंखला में, दैट इज आनंद राठी. अगला है गणेश हाउसिंग. तो रियलिटी में अगर आपको कुछ फंडामेंटली प्योर नाइस अच्छी सी बुक अगर देखनी है ना, तो आपने इस स्टॉक को जरूर देखना चाहिए. मार्जिन्स हाई, रिटर्न रेशियोज हाई, अर्निंग ट्रेंड सुपर सॉलिड. Earning trends are really going good over here. Valuation, damn cheap with respect to its 5 year average, damn cheap with respect to its industry P by E. तो ये स्टॉक है जो एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है रियलिटी में.
with a very good book also. You can observe over here the jump in the margins and best in the class of EBIT so far and best in the class earnings so far on the quarterly basis. So तीसरा stocks जो चौथा stock है with respect to great fundamentals is Ganesh Housing. Another name which is coming from the financials brokerage side is the Geojit Finance. तो Geojit Finance में भी आपको देखने को मिलेगा एक good margin business, good profit growth, quarterly, annual at a very reasonable P by E, low debt to equity. So everything looks pretty strong, pretty safe over here in case of Geojit Finance. And Geojit Finance also structurally, if I show you, let's have a quick look. You can observe it is on the way to gain some strength. So keep a watch on Geojit Finance. That is what is the fourth fundamentally strong stock. And one, two, three, four. We are done with five. And then the last one as a bonus is Raju Engineers. तो राजू इंजीनियर्स में भी आपको काफी अच्छा मार्जिन दिख रहा है. यू आर एबल टू सी गुड मार्जिन, गुड रिटर्न रेशियोज, हाई ग्रोथ. Quarter to quarter game is also running pretty strong. Year on year also it is pretty strong. Market cap is small and the promoter holding is 66%. So give a watch, keep a watch for Raju Engineers also. So overall, these all stocks that I'm scanning are coming from my platinum quality scanner. So here I scan for the various growth criterias and the various criterias that will ensure that this growth will remain positive on the way going ahead. So anytime you want to learn about how do we scan for these solid fundamental stocks, definitely join the Turtle Club or you can join the Breakout strategy program. The Breakout strategy program is the one where we use the strongest fundamentals, and out of those scanners, we have picked up with the today's fundamentally great results, right? So these are the good setups definitely that you should look for. Number one choice for me will be Anand Rathi because of its Techno Funda. Mazgaon Dock, I'm going to wait till 4800 to get a good entry because yes, fundamentals have not gone at all anywhere. Just the price has corrected due to the valuation scare as well as the market situations. So that is it, folks, in the today's set of five great breakouts as well as five good fundamentally solid results coming through this quarter. Hope you liked it. Definitely put your comments and likes and share this video because your comments give me a lot of encouragement to put it up as more and more case studies over here. If you're interested to learn more dashboards for scanning, definitely mention in the comments that you would like to learn more about a new flagpole dashboard that I am going to develop. Now, this dashboard is talking about stocks which are coming out of their range and they have been having a great hit rate. A very clear, very simple strategy. So if you're interested to get a dashboard about the flagpole strategy, definitely mention it in the comments as well as do mention fundamentally which stock you prefer out of all the five that I've presented, as well as technically also which is your first and top choice to go for. So be safe in the market. There is positivity expected, but yeah, stay on guard because always we are the ones who are optimistic along with the caution. So we are cautiously optimistic as always. Take care. Bye bye.